Assalamu alaikum. So in this video we will solve question number 9 of exercise 12b. So we have to construct a parallelogram ABCD. So two sides are given and one angle is given. So first of all we will draw length AB which is equal 9 centimeter. So we will draw length AB equal 9 centimeter. So this is line A, B, which is equal 9 centimeter. So here we will write construction. Draw AB equal 9 centimeter using scale. Okay, so draw AB equal 9 centimeter using scale. So second step, so we will construct angle B ABC. So this gap mean angle at point B, so we will construct angle of 115 degree at point B, 115 degree at point B. So this is the line where angle 115 degree form. So angle 115 degree. So we'll draw this line. This is angle 115 degree. Okay, so now इधर हम लिखेंगे point construct one 15 degree angle at point B using protector. So third point. So now we have to draw this BC. So we will open compass to the length 6 centimeter. Compass को हम 6 centimeter तक open करेंगे. We will open compass to the length 6 centimeter. So we will open compass to the length 6 centimeter and draw an arc. So this is 6 centimeter arc. Draw an arc of radius. Draw an arc of radius 6 centimeter with B as center. Okay, so now we will draw an arc of radius 6 centimeter again. So 6 centimeter arc हम again draw करेंगे. So we will draw another arc
of radius 9 centimeter, another arc of radius 9 centimeter. As we know that base of a parallelogram, base of a parallelogram and this length is equal, so we will draw an arc of 9 centimeter. Draw an arc. मैं चेक कर रहा हूँ कि 9 सेंटीमीटर ही ओपन किया, थोड़ा सा फ़र्क तो नहीं है. सो ये 9 सेंटीमीटर जो है हम इधर रखेंगे कंपास को एंड अगेन ड्रा करेंगे एक 9 सेंटीमीटर की आर्क. सो दिस इज़ द पॉइंट where point D is formed. So we'll join, this is point C, D and A को हम join करेंगे, C, D and now A. Okay, so now this is our given parallelogram. So 4 step हम लिखेंगे. 4 step. Draw an arc of radius 6 centimeter. Draw an arc of radius 6 centimeter with A as center and draw another arc. Draw another arc of radius 9 centimeter with C as center. And 5th point is join A, G and C. So these are the 5 steps जो कि हम कर चुके हैं. Okay, so in first part we have to find the length of diagonal BD. So ये BD length जो है हमें find करनी है first part में. First part में हमें diagonal BD जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है. बी डी डायगनल है उसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है. सो बी डी की जो लेंथ है हम डायगनल की हम फाइंड करेंगे यूजिंग स्केल. सो दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट जी. सो नाउ यू कैन चेक दिस लेंथ. सो इफ़ यू चेक दिस लेंथ इट इज़ इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर. सो बी डी जो लेंथ है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल है. 8.4 सेंटीमीटर. सो बी डी जो लेंथ है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल. एंड इन सेकेंड पार्ट of question number 9 we have to construct perpendicular bisector of AB. We have to construct perpendicular bisector of AB. So we have to construct perpendicular bisector of AB. So AB का हमें perpendicular bisector draw करना है. So perpendicular bisector draw करने के लिए हम क्या करते हैं, as we know हमने 12A के questions में भी किया हुआ है. हम कॉम्पस को ए बी का जो है हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है. सो वी विल ओपन कॉम्पस टू द लेंथ, मतलब इसकी हाफ से ज़रा ज़्यादा लेंथ जो है हमने उसको ओपन कर लेना है. एंड ड्रा एन आर्क. सिमिलरली ड्रा अनदर आर्क. Similarly draw an arc with A as center. And similarly draw another arc. So इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. So now we will join these points. इन points को हमें join करना होगा. In points, now we will join these points. So this is our given perpendicular bisector of A and B. A B का ये perpendicular bisector है. So जिस point पर ये कट कर रहा है उस point को हम D कहेंगे. D point कहेंगे. So this is point D. So इसके लिए construction steps लिखता हूँ. 6. Draw an arc
with A as center and B as center. Try an arc with A as center and B as center of same radius. Inside and outside of parallelogram. These arcs will catch each other and 7 point join these arcs. Measure length A3. So now we will measure the length A3. So क्वेश्चन में एक्चुअली ये कहा हुआ था कि मतलब आपने ये ड्रा करना है बी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यू विल ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल कट लाइन सी डी एट पॉइंट टी. सो ये जो सी डी को लाइन को टी पर कट करेगा, टी पॉइंट पर. एंड नाउ विल मेजर द लेंथ ऑफ ए टी. मतलब ए से जो टी तक की लेंथ थी वो हमने मेजर करनी है. ए से टी तक की लेंथ जो है मेजर करनी है आपने. A3 हम मेजर करेंगे. A3 इक्वल जो है हमने. सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.2 है ऑलमोस्ट, लेकिन एग्जैक्ट जो है हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर है. सो if you draw this parallelogram and perpendicular bisector with sharp pencil, so you will get exact answer. So this is question number 9 and you also have to write these construction steps. ठीक है, और यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, मतलब आप अपने अल्फाज में भी इनको लिख सकते हैं, कोई ये मुश्किल नहीं है. सो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.